Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलो हम शुरू करते हैं अपना काम। तो लास्ट टाइम हमने किया था सीरीज के बारे में, पहले दो इनिशियल एक दो रिजल्ट. सीरीज मींस we take a sequence and then try to see, look at the sequence of the partial sums. If it converges, then we see the series converges, and we write down. Okay, let me share the screen. तो अगर मेरे पास एक sequence है, let me repeat, n runs from 1 to infinity. Then what I do, I take this another sequence of partial sums, that is S2 is equal to A1 plus A2, and so on and so forth. Similarly, I would have Sn equal to A1 plus A2 plus up to An. And suppose this sequence, जो नहीं है, sequence of partial sums converges to some number L, then we say, we say summation n runs from 1 to infinity converges, and we call it the series. The series converges, the sequence converges. इस तरह से फिर हम कहते हैं अगर इसके nth partial sums जो है या partial sums जो है अगर वो converge होते हैं तो we say that series converges, and we write it like this. And we also write summation n runs from 1 to infinity, n is equal to L. So इसका मतलब basically this is equivalent to saying that limit n approaches infinity, this sequence of partial sums is equal to L. तो ये तो खैर था ही. फिर हमने ये देखा कि अगर summation n converge करता है, then this sequence, जो original sequence है, this must converge to 0, जहां से हमने ये series बनाई थी. But converse is not true, जो कि हमने देखा कि converse is not true because if I take this series, summation 1 by n runs from 1 to infinity, this diverges, this does not converge. Although, as you can see, limit n approaches infinity, 1 by n is indeed 0. So this is true, but its converse is not true. Example is this one. Okay, so what we do, एक बड़ा सा कुछ हम exercises कर सकते हैं इस पे. और furthermore, अब जब हमने लिख ही दिया तो if a series summation n runs from 1 to infinity converges, हम ऐसे लिखते हैं. We write summation n runs from 1 to infinity, n is less than infinity, and if it diverges, we write summation n runs from 1 to infinity, n is equal to infinity. इसका मतलब है diverge करती है, इसका मतलब converge करती है. Now मैं देख रहा था इस पे कुछ exercises, C.G. गोल्डबर्ग की बुक है. इसकी एक exercise है, जैसे suppose I have a series A1 plus A2, so on and so forth, which converges to some S. It converges to S, and show that अगर मैं सीरीज लूं एक टर्म को छोड़ के A plus A2 3, this converges
to s minus a1. तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक एक्सरसाइज, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है कि हम लेंगे लेट Sn be equal to the nth partial sum of the original sequence, right? Then what we do, I take Tn to be the nth partial sum of this series, 0 plus a2 up to an, right? So that means what? पहले तो ये तो अगर मैं ऐसे लेता हूँ, so what does that mean? So this is ये जो मेरी, this is the nth partial sum of the series a1 plus a2 plus so on and so forth, right? And this is the nth partial sum of the series a2, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. This is the partial, these are the partial sums of the given series. Now it is given that summation यानी a1 plus ऐसे लिखते हैं converges to s. इसका मतलब क्या है? इसके जो nth partial sum है, limit n approaches infinity, right? Sn is equal to s, but Tn is nothing but Sn minus a1, right? तो अगर इसको Tn में से a1 निकालेंगे तो you get s1, या Sn में से a1 निकालेंगे. So this implies that limit n approaches infinity, Tn is the same thing as limit n approaches infinity, Sn minus a1, that is equal to limit Sn n approaches to infinity. एक n के साथ a1 का a के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको. So that would be equal to s minus a, which means that this series must converge to s minus a. So बड़ा easy. एक और है इसमें, show that this converges, show that this series converges, show that summation 1 by n into n plus 1 and runs from 1 to infinity converges. So here an जो है, that's equal to 1 by n into n plus 1. But this is the same thing as 1 by a minus 1 by n plus 1. Can you see this? This is an. Because this would be n plus 1 minus n. वहां से मिलेगा 1 और denominator तो same है. Anyway, we just broke it into its partial sums. Now, what would be a1? A1 would be 1 minus 1 by 2. What would be a2? A2 would be 1 by 2 minus 1 by 3. A3 would be 1 by 3 minus 1 by 4, so on and so forth. An minus 1 would be 1 by n minus 1 minus 1 by n. And an would be 1 by n minus 1 by n plus 1. So therefore, the nth partial sum जो होगा, जिसको मुझे देखना है whether it will converge, nth partial sum किसके बराबर होगा? If I add them, Sn is equal to a1 plus a2 up to an. मैं इनको right hand side मुझे इनको add करना है to get the nth partial sum. So I see that these terms are cancelling, है ना? बचा क्या? It is just equal to 1 minus n plus 1. So this would be equal to, keep it as it is. So अगर ये sequence converge करती है तो ये series converge करेगी, because इसका nth partial sum जब converge करता है तभी हम कहते हैं ये series converge करती है. And as we can see, limit n approaches infinity, Sn is equal to limit n approaches infinity 1 minus 1 by n plus 1. Then what you do, just take the limit. So it is 1 minus limit n approaches. As n approaches infinity, n plus 1 approaches infinity. Therefore, this would be 0.
So it is 1. So therefore, actually, summation n runs from 1 to infinity क्योंकि converge करता है. Sequence of partial sums 1 by n into n plus 1 does converge, and in fact, I can write converges to 1. Oh, that's wonderful. No. Okay, so this is equal to 1. Yeah, it tells us that 1 by 1 to 1 by 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4. अगर हम इसको infinitely add करते जाएं, it's exactly equal to 1. Right? So that's good. क्या बोलते हैं? Interesting fact. Okay. इसी तरह से चलो मैं तुम्हें होम असाइनमेंट देता हूँ. For what values of x does this series 1 minus x plus x minus x square plus x square minus x cube plus so on and so forth converge? मतलब x का क्या वैल्यू होना चाहिए? तो ये जो है ना ब्रैकेट का मतलब ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है. अगर ये कन्वर्ज करे तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो ये तुम्हें देना चाहूंगा. मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट. तो बेस्ट है. पहली बात तो ये है कि तुम्हें nth टर्म शुड कन्वर्ज टू 0, राइट? यानी nth टर्म इसकी क्या होगी? इट वुड बी x raised to power n minus 1 minus x raised to power n. This would be your an. Or for the convergence, it is necessary that this converges to 0, and further we don't देख सकते हो कि कब कभी converge करेगी. Anyway, तो एक और हो सकती है. ये अच्छा है. So if you have a series, now consider this series. चलो ये कर सकते हैं. Consider this series. Show that, prove that a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus so on and so forth, ये सीरीज कन्वर्ज करती है if and only if the sequence converges. The sequence an and runs from 1 to infinity converge करे, तब जाके ये सीरीज करती है. मतलब यहाँ तुम्हें सोचना है तुम्हारी जो पहली टर्म है सीरीज की वो a1 है, a2 है. तो हम करेंगे let an be equal to small an minus an प्लस 1, राइट? तो तभी तो ये सीरीज बनेगी. तो हमें दिखाना है कि अगर an कन्वर्ज करेगी तो समेशन, वी हैव टू शो that summation n runs from 1 to infinity converges if and only if the sequence an converges. Now suppose summation an runs from 1 to infinity converges, तो हमें पता है अगर ऐसा है तो it implies that limit an, it is necessary that this goes to 0, which implies that limit n approaches infinity, an minus an plus 1 must go to 0, right? So what does that mean? So it means that using the laws of limits, नहीं, laws of limits use करें कि नहीं करें?
ओके ओके ओके, नहीं उल्टा ऐसे कर सकते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये कन्वर्ज नहीं करता, so therefore this will not exist. Uh, Therefore this will not exist. Therefore it will not converge to zero. Therefore this will not converge. हाँ, नहीं उल्टा है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वेट है, उससे ज्यादा इजीली प्रूव होगा। नहीं, सपोज n runs from 1 to infinity does not converge, implies that limit n approaches infinity, an minus a plus 1 does not exist, which implies that limit n approaches infinity, an cannot be equal to 0, which implies that summation an runs from does not converge. A capital does not converge. So therefore, if summation an runs from 1 to infinity converges, then an must converge. Chalo. Now suppose that an converges, and limit n approaches infinity, converge, there will be some number like this. Now, agar मैं लूं Sn to be a1 plus a2 plus up to an, this would be equal to a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus so on and so forth, an minus n plus 1. As you can see, these terms are cancelling. What you will get is a1 minus an plus 1. So limit Sn n approaches infinity would be limit n approaches infinity, a1 minus an plus 1. A1 is a fixed number, so it would be a1 minus limit n approaches infinity, n plus 1. That's equal to a1 minus n. So therefore, this limit exists and converges, which implies that this Sn n runs from 1 to infinity converges. और अगर ये कन्वर्ज करती है तो उसी का मतलब तो है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, एक और आया है, चलो ये मैं तुम पे होम असाइनमेंट छोड़ता हूँ कि does the series use the properties of the log, I think, and runs from 1 to infinity log of 1 plus 1 by n, ये जो सीरीज है, does this converge or diverge? एक और हम कर सकते हैं, चलो एक और होम असाइनमेंट हमारे सिंपल है। Now let a b be any two real numbers. Now show that a plus b plus a plus 2b plus so on and so forth diverges unless a is equal to b is equal to 0. क्योंकि अगर ये a और b दोनों 0 है, फिर तो ऑफकोर्स इट इज 0 plus 0 plus 0, so it must converge करे, अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं करेगी। So ये भी इजी ही होना चाहिए। Then there is this Cauchy's general principle of convergence. Let me leave it for नहीं कर सकते हैं, हमने किया है a sequence, Cauchy's general principle of convergence. It is the same thing as the Cauchy's general principle of convergence for sequences. Now we can adapt it to, क्या बोलते हैं, we can adapt it to the series. Let me tell you how.
Cauchy general principle of conversion says जो हमने किया था, now let summation n runs from 1 to infinity be a series of real numbers, then the series converges. Then the series summation n runs from 1 to infinity converges if and only if given any epsilon positive, there exists a natural number n, should I write n, ठीक है, such that mod of summation k runs from m plus 1 to n, n is less than epsilon for all mn greater than equal to m naught. But this is the same thing as Cauchy general principle for the convergence of a sequence. तो proof हम वही करेंगे, proof. Now let let Sn be equal to A1, A2, An be the nth partial sum of the given series. Partial sum of the given series. तो हम दिखाएंगे ये converge करेगा if and only if that condition is true. Now we know that Sn n runs from 1 to infinity converges if and only if Sn is Cauchy. Is a Cauchy sequence. Cauchy sequence का मतलब, that is if and only if for any epsilon positive there exists an m naught belonging to the set of natural numbers such that Sn minus Sm is less than epsilon for all nm greater than or equal to n naught. Now, what is Sn? Sn in our case is A1 plus A2 plus so on and so forth up to An. And what is Sm? Sm is A1 plus A2 plus so on and so forth up to Am. और अगर मैं इन दोनों को subtract करूं, Sn में से An में से Am terms निकालूं, say m is less than n, then Sn minus Sm would be Am plus 1 plus so on and so forth to Am. So this implies that summation, मैं पूरा लिखता हूँ, Am plus 1 plus so on and so forth plus An is less than epsilon for all nm greater than n naught, which implies that summation जो हमने वैसे लिखा था k runs from m plus 1 to n, ak is less than epsilon for all nm greater than equal to n. तो अगर हम so therefore अब अगर ये sequence converge करेगी, sequence of partial sums, तभी तो series converge करेगी. That's the meaning. Therefore, summation n runs from 1 to infinity. An converges if and only if for any epsilon positive there exists this n naught such that summation k runs from m plus 1 to n. Ak is less than epsilon for all nm bigger than equal to n. So simple the Cauchy general. It is the same as Cauchy general principle of sequences. For the convergence of sequences, we apply it to the sequence of partial sums, and we are done. Okay. इसी तरह से you could, okay.
Suppose a series converges to A. चलो ये तुम्हारा होना चाहिए, ये simply वैसे. Now suppose summation n runs from 1 to infinity converges to some number A. Then show that 1 by 2 into A1 plus A2. हम ऐसा ये कर चुके हैं, ठीक. 1 by 2 into A2 plus A3 plus so on and so forth also converges. लेकिन can it, now you have to tell me what does it converge to. अगर A को converge करेंगे, what does this converge to? तो इसका solution भी हम कर सकते हैं कैसे? So let Sn be equal to the nth partial sum, ठीक है ना, up to an, and let Tn be another partial sum. Let be 1 by 2 A1 plus A2 plus 1 by 2 A2 plus A3 plus so on and so forth. 1 by 2 an plus 1, right? हमें पता है ये converge करता है A को, ये sequence of partial sums, because the series converges, that's what we mean. But अगर तुम यहाँ देखो, this can be written as 1 by 2 A1 plus 1 by 2 into A2 plus A2, क्योंकि ये A2 और ये A2 add हो जाएगा, plus 1 by 2 into A2 plus A3, right? Plus so on and so forth, right? It should be 1 by 2 into an plus an, क्योंकि ये जो है ना, ये और ये, इसका दूसरा और इसका पहला, यहाँ पर कोई दूसरा होगा, उसका यहाँ पहला होगा, लेकिन ये an plus 1 बचेगा, है ना, right? So that is nothing but 1 by 2 A1, क्योंकि दो बार आया ये. 1 by 2 an plus 1 बचेगा. हाँ हाँ, 1 by 2 बचेगा, गुड. लेकिन मजे की बात है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस वाज कन्वर्ज्ड टू 0. Anyway, but अगर तुम देखोगे ना, ये क्या है, it is A2 plus A2, it is twice A2 divided by 2, twice A3 divided by 3, so it is just A2 plus A3 plus so on and so forth plus an plus 1 by 2 an plus 1. अब देखो, अभी इस 1 by 2 से क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला. अब देखो, this can be written as minus 1 by 2 A1 plus A1 plus A2 plus so on and so forth plus an plus 1 by 2 an plus 1. ठीक है, ये क्लियर है. मैंने ऐड भी किया 1 by 2 A1 और सब्ट्रैक्ट किया. जब ऐड किया तो ना, ये तुम खुद ही सोच सकते हो कि ये इसके बराबर है. Anyway, so now since this is actually equal to minus 1 by 2 A1 plus Sn plus 1 by 2 an plus 1. And as you can see, what would happen? Now we know that summation n runs from 1 to infinity converges to L. पहले तो ये converges to A. So it implies that पहले तो ये है कि limit n approaches infinity, an is equal to 0, and limit Sn n approaches infinity should be equal to A. हमारा काम हो गया. So therefore limit Tn n approaches infinity should be equal to limit n approaches infinity minus 1 by 2 A1 plus Sn plus 1 by 2 an plus 1. So that would be इसका limit के साथ कोई लेना देना नहीं, plus limit n approaches infinity Sn plus 1 by 2 into limit n approaches infinity an plus 1. So this is minus 1 by 2 A1 plus this is A plus this is 0. So it is actually A minus 1 by 2 A1. So therefore indeed वो converge करता है. हमने दोनों चीजें दिखा है. Indeed 1 by A1 plus A2 plus 1 by 2 into A2 plus A3 plus so on and so forth converges to A minus 1 by 2 A1.
That's interesting. Okay. Now there is another जो हम कर सकते हैं कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर कोई सीरीज इस तरह से, मान लो एक सीरीज है जो कन्वर्ज करती है, थोड़ा ट्रिवियल लगता है लेकिन एक्चुअली है नहीं, आगे चल के शायद तुम्हें लगे ये ट्रिवियल है कि सपोज कोई सीरीज कन्वर्ज करती है a1 प्लस a2 प्लस a3, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी a1 प्लस 0 प्लस a0 प्लस a3 प्लस 0 प्लस so on and so forth. There is a form of convergence जिसको हम बोलते हैं zero convergence, CN convergence. वहां पे ये ट्रू नहीं है कि अगर बीच में आप जीरोस इंसर्ट करोगे तो सीरीज उस सेंस में कन्वर्ज करेगी, हमें उस तरफ नहीं जाना, लेकिन बेसिकली आई वांट यू टू शो दैट दिस आल्सो कन्वर्जेस. कैन यू डू इट? ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम करो कि अगर किसी सीरीज में कहीं तुम्हें सिर्फ nth पार्शियल सम्स पे ध्यान देना, ठीक है, ठीक है ना. अब इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि इसका जो पहला पार्शियल सम सेम है, दूसरा इसका पहला ही रहेगा, तीसरा है ना इसका दूसरा रहेगा पहली सीरीज का, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि वो कन्वर्ज ही करने वाला है तो ये भी कन्वर्ज ही करेगा, बट यू हैव टू प्रूव इट एनीवे. प्रूव इट. हाँ मैं चाहूंगा तुम्हें करो. ओके नेक्स्ट. हाँ अब एक ये भी सीधा ही है, मैं चाहूंगा तुम करो. ये एक्सरसाइज 11 है इसकी गोल्डबर्ग की कि इफ summation a n runs from 1 to infinity converges and summation n runs from 1 to infinity bn diverges, then summation an plus bn, अगर मैं टर्म वाइज इनको करूंगा, it diverges. ये भी सिंपल है, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज की ये है 12. It says that let an, let this be a convergent series. An, okay, be a convergent series. And ni, अच्छा है, I runs from 1 to infinity be a subsequence of natural numbers. I hope हमें टाइम बचे इसके लिए क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज है. Then show that if b1 is equal to a1 plus a2 plus so on and so forth up to an1, b2 is equal to an1 plus 1 plus an1 plus 2 plus so on and so forth an2, इसी तरह से अपना जो bn है वो बराबर है an, एरिया की आइडिया. चलो मैं लिखता हूँ bn को, यहाँ पे n2 आ गया तो यहाँ आना चाहिए, I should not, मैं k ही लिखता हूँ, इसने अच्छा किया है क्योंकि n हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. kn minus 1 plus nk plus 2 plus so on and so forth n, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने. okay. किसी ने कुछ चैट भेजा है, सर इतना ही पढ़ेगी क्यों, अभी थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेस की सिंपल वाली होंगे. सो इट शुड बी n sub k minus 1 plus 1 plus so on and so forth, यहाँ पे an sub k. अगर इस तरह की हम सीरीज लें, then through that show that summation bk k runs from 1 to infinity converges and to the same sum, and उसका लिमिट जो है and has the same sum as summation
n runs from 1 to infinity। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो सबसीक्वेंस होने का मतलब है कि ये मतलब these are subset of natural numbers preserving the same order। यानी अगर अब मैं जंप करूं इसकी जो सपोज n1 is equal to 2, n2 is equal to 5, तो इसका मतलब है b1 फिर होगा a1 plus a2, b3 होगा a1 plus a2 plus नहीं सॉरी मैंने गलत किया, देखो जल्दी में ही होता है। मेरा b3 वाली टर्म जो होगी वो होगी नहीं सॉरी b2 वाली टर्म, इट विल बी इसके बाद a3 plus a4 plus a5। इसी तरह से अगर मेरा n3 मतलब आई हैव गॉट अ सीक्वेंस सबसीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो आई कैन क्रिएट these sums, और हम दिखाएंगे ये जो ये sums है जो अगर मैं उससे जो सीरीज बनाता हूँ फिर मतलब अगर मैं इस तरह से लेता हूँ a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5, मतलब लग रहा है कि इट शुड बी सेम, यानी एक्चुअली में ओरिजिनल सीरीज जो है उसमें पैरेंथेसिस पुट कर रहा हूँ, मतलब अकॉर्डिंगली जो मेरी ये सब सीक्वेंस है। सो दैट मींस इट मस्ट हैव द सेम सम, लेकिन प्रूव भी करना है इसको। सो लेट मी राइट इट डाउन, इसका प्रूफ मैंने कैसे किया था। ओके ओके सो लेट b1 तो हमने किया ही है, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो शायद मैं लिखना भूल गया प्रॉब्लम में, this be a convergent series, right? Okay, so what we can do now is this. Okay, I have got this series, I have to show that this converges, so that means I have to let us write it down, right. So basically if Sn are the partial sums, अगर ये है is the sequence of partial sums of an, then क्योंकि ये जो an है ये converge करती है, so therefore Sn n runs from 1 to infinity converges to L। Now Sn1 किसके बराबर होगा? It is just equal to a1 plus a2 so on and so forth an1। इसका मतलब होता है ना हम n1 तक सम करें। Sn2 किसके बराबर होगा? Sn2 होगा a1 plus a2 plus so on and